Welcome back to the channel. We're doing absolutely fine. I don't know how I feel about this movie, but I thought of making a kind of a breakdown in Hindi video जहाँ पे मैं just figure out कर रहा हूँ कि ये समझने की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि exactly क्या हुआ है मूवी में. And I don't know how to put this out, but it is a very much confusing movie, even if it was meant to be a kind of a very deep meaning movie जहाँ पे so absolute spoiler alert. I'm going to discuss what happens in the movie and what I thought is this movie is. So अगर आपने मूवी तक अभी तक देखी नहीं है तो I'm just trying to tell you what story that I have understood. इस मूवी में इट स्टार्ट फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ बारबी लैंड जहाँ पे सारी बार्बीज को रखा हुआ रहता है एंड इट इज़ देयर ओन इमेजिनरी लैंड. ऑन मैप इट इज़ काइंड ऑफ शोन दैट दे हैव दिस इमेजिनरी पोर्टल जहाँ से बारबी एंड द रियल वर्ल्ड लाइक बारबी लैंड एंड जो रियल लैंड लाइक द रियल वर्ल्ड है उसका एक काइंड ऑफ पाथवे रहता है. सो स्टार्टिंग में इट इज़ काइंड ऑफ शोन कि बार्बीज आर लाइक Barbie है. After so Barbie land में there are different types of Barbies. There is the president is Barbie, everyone is Barbie, and there are also Kens. So अगर वो Ken is the kind of the male version of Barbie जहाँ पे जो अलग अलग टाइप के डॉल्स होते हैं जो मेल डॉल्स रहते हैं उनको Ken बुलाया जाता है. एंड उसके अंदर उनको ये एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस रहता है कि ऑफ कोर्स इट इज़ अ बार्बी लैंड. तो उस पूरे लैंड की जो मेन लीडर्स काइंड ऑफ हो गया उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसका दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम बाबी. तो ऑब्वियसली उस स्पेसिफिक लैंड में जो कैंस रहते हैं उनको ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. उन्हें काइंड ऑफ सेल्फ फील करवाने के लिए उन्हें बहुत अलग लगता है बिकॉज दे आर काइंड ऑफ नॉट given that importance obviously. And then there is this real world जहाँ पे मैटल which is the real owner of Barbie and जिन्होंने बार्बी को बनाया है उस जो रियल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन रहती है उन्हें इस तरीके से लिंक किया गया है कि जो एक उनकी एक असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट बोला जाए शी काइंड ऑफ ट्राइज टू प्ले विथ वन बार्बी एंड उसके जो इमोशंस रहते हैं वो इमोशंस बार्बी में आ जाते हैं या एंड उसकी वजह से जो रियल मार्केट रॉबी की जो बाबी रहती है वो सडनली स्टार्ट फीलिंग दोज इमोशंस. शी बिकम सैड एंड नॉट हर सेल्फ एंड उसकी वजह से शी ट्राइज टू नो अबाउट इट. एंड देयर इज द अगली बाबी जिसे कहा जाता है वो उसे उसकी सलाह लेने जाती है वहाँ पे एंड उसे वहाँ जाके समझता है कि जो उसे रियल इमोशंस है जो उसके अंदर आ रहे हैं वो उस रियल पर्सन की वजह से वो वैसे इमोशंस फील कर रही है. एंड उसकी वजह से दे काइंड ऑफ थिंक कि वो जाके रियल वर्ल्ड में उन्हें जाना चाहिए. एंड रियल वर्ल्ड में तो वो आके पता चलता है उन्हें कि या तो और गड़बड़ है सारे इमोशंस और ऑलरेडी मिक्सड अप है. वहाँ जाके काइंड ऑफ स्टोरी goes to a more deeper level because वहाँ पे जाके they start comparing how feminism is and how women are not given equal opportunity. And there was surprisingly no women at all in higher positions. The narrative which this movie has kind of leading to, I again don't want to comment on that, but it goes in a very different direction जहाँ पे जाके बाबी को ये समझता है कि जो उनका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने उसे बनाया था they are kind of now trying to put her in a box which was really bad and probably they will ship her across trying to tie her up. And at the same time जब भी बारबी लैंड से जस्ट रियल वर्ल्ड में आई तभी उसके साथ कैन भी उस रियल लैंड में आया था. एंड कैन को जब ये रियल वर्ल्ड दिखता है उसे ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा बिकॉज ही वाज इन अ फीमेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड थ्रू आउट हिज होल लाइफ. And this is what the point that they are trying to make, how women must be feeling in a male dominant world, which is technically not the point of feminism, but I don't know what they are portraying. But at the end they kind of show he goes back to the Barbie land and converts the whole Barbie land into Ken dumb. Yeah, it is dumb. Then we come across the whole सिनारियो जहाँ पे जो रियल गर्ल रहती है एंड उसकी मॉम रहती है जिसकी वजह से बाबी में सारे इमोशंस आ रहे हैं. दे आइडेंटिफाई बारबी एंड दे कम इन बारबी लैंड
एंड वहाँ पे आके उन्हें समझता है कि दिस होल वर्ल्ड हैज़ काइंड ऑफ बीन डोमिनेटेड बाय केन नाउ एंड I don't know what I'm saying, or yeah, this is literally the story which they are following. I don't know. And उसके बाद what I remember of is they, again, if you're trying to make a point about feminism and if you're trying to make a point that she was actually affected by what was happening in the real world, then she was trying to then they वो लोग इस तरीके से स्टोरी बता रहे हैं कि they try to make Ken battle amongst each other, and जो Ken डम उन्होंने जो बनाया था उसे वो एक दूसरे की जेलसी से तोड़ने की कोशिश करते हैं, एंड एट द एंड वो हो भी जाता है. दे स्टार्ट की देखी फाइटिंग अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, एंड जो सारी बाबीज़ है वो वापस बारबी वर्ल्ड कॉन्कर कर लेती है. एंड एट द एंड व्हाट वी गेट टू नो इज़ जब भी बारबी जो रियल वर्ल्ड है मैंटल का वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी ओनर से मिलती है, बट एट दैट टाइम शी डिड नॉट नो दैट शी वाज द ओनर. एंड तब तक हमें ये भी समझ जाता है कि जो एट दैट टाइम जो CEOs एंड सारी जो मैनेजमेंट में थे, दे काइंड ऑफ ऑल्सो कम इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ बाबी, एंड दे आर काइंड ऑफ गेटिंग इमोशनल अबाउट दैट, एंड everyone starts waving, which was kind of very much towards the point that I was like क्या ही चल रहा है इसमें. And the end it is shown in such a way कि वो जो मेन ओनर रहती है जिसने बाबी को क्रिएट किया है, she kind of tells her that what are you now if you are not just a pretty doll, if you are not some smart Barbie, or if you are not some smart toy, what exactly you want to be. And then she says I can be human. Okay, and that at that point I was like, is going on now? And she will be coming to a real world, and at the end it is just shown that she goes and visits a gynac. Yep. So that they can make Barbie 2, showing when she comes in the real world she would probably meet someone, have their own story, and this is the story of Barbie. I really don't know how to feel about this. 2 घंटे तो चले गए मेरे, but you decide if you want to watch this movie in the theaters, and if you have already watched this movie then please comment below what are your thoughts and let me know. Thank you so much if you're still watching until here. Do let me know in the comments below जो भी आपको लगता है इसके बारे में, and please subscribe कर देना to my channel if you haven't subscribed yet. I'll be meeting you in the next video.